एवरीवन, हमारी आज की रेसिपी है स्ट्रॉबेरी मूस। बहुत ही इजी सी रेसिपी को फॉलो करके हम केवल 3 इंग्रेडिएंट्स में ये स्ट्रॉबेरी मूस बना के रेडी कर लेंगे। इसको घर में बनाना बहुत आसान है, केवल 10 से 15 मिनट में ये रेडी हो जाता है। इसमें ना ही आपको कोई कुकिंग करने की ज़रूरत है, ना ही गैस जलाने की ज़रूरत है और केवल 3 इंग्रेडिएंट्स में ये झटपट बन के रेडी होने वाला एक डेजर्ट है जो बच्चों को बहुत पसंद आने वाला है और बड़ों को भी ये बहुत अच्छा लगेगा। एक हेल्दी रेसिपी है, दूध से बनने हुए इंग्रेडिएंट्स का हम यूज़ करेंगे, तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं तो आप उनके आगे सर्व कर सकते हैं। अब ये वीडियो एंड तक देखिएगा, इसमें मैंने कुछ हिंदी इंग्लिश सबटाइटल्स लिखे हैं जिसको पढ़ के आपको पता चल जाएगा कि ऐसा ही सिल्की स्मूदी वाली टेक्सचर वाला स्ट्रॉबेरी मूस बनाना कितना इजी है और आप इसको झटपट अपने घर पे बना लेंगे। और जब आप उसको बनाएं तो उसकी सुंदर सी पिक खींच के ज़रूर मेरे सोशल नेटवर्किंग हैंडल पे भेजिएगा जो आपको सामने नज़र आ रहा है, तो मैं लगाऊंगी आपकी पिक को अपनी अपकमिंग वीडियो में एज अ थैंक टू यू। तो जी स्वागत है आपका प्रिश किचन में एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रेसिपी।
इस स्ट्रॉबेरी मूस की रेसिपी को ज़रूर अपने घर पे ट्राई कीजिएगा और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और प्रिश किचन को सब्सक्राइब करे बगैर बिल्कुल मत जाइएगा। और अब आपके सामने आ रही है प्रिश किचन की कुछ यमी यमी रेसिपीज़ की ग्लिम्स, तो उसको भी एंजॉय कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।